चलो सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास का रिवीजन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का एक छोटा सा पार्ट है बेटा। ओके फर्स्ट हेडिंग लिख लीजिए। I'm audible now बेटा? ओके चलो फर्स्ट हेडिंग देखो बेटा। सेंटर ऑफ मास for a system of particles. For a system of particles. Okay. मान के चलो this is your x-axis, this is your y-axis. इसमें there are, like say for example, n number of particles present in this one. ठीक है ना? यहाँ से यहाँ तक मान के चलो m1 So somewhere here I'm having a particle, say for example m1. Here the particle like say m2. Here the particle like say for example m3. Go on like that. Okay. That means from here to here there is a position vector of this one. That is nothing but r1. This one is right now for me r2. This one is say for example r3. Okay. The center of mass of this total system will lie somewhere here, isn't it? Because of all the systems, somewhere here I'm taking the center of mass because of the total system. Okay. So when you are talking about the system particles, the first formula which you need to remember is center of mass for the position vector. RCM bar will be equal to your M1 R1 bar plus of your M2 R2 bar plus of your M3 R3 bar plus so on up to your Mn Rn divided by total number of your particles. That is nothing but equal to your M1 plus of your M2 plus so on up to your Mn. Okay. So in general, I can write position vector of center of mass will be equal to your summation of your M into your R bar divided by summation of your total mass. So this will be the center of mass for the position vector. Clear? Sure. Now, if I'm talking about for center of mass of x-axis, isn't it? Like say for the x-axis, I can write XCOM will be equal to your M1 X1 plus of your M2 X2 plus so on up to your Mn Xn divided by your M1 plus M2 plus so on up to Mn. That means I can write this one as of your summation of your all the particles M along your x coordinate divided by summation of your M. Then the same way y coordinate of center of mass. That will be equal to your M1 Y1 plus of your M2 Y2 plus so on up to your Mn Yn divided by your M1 plus M2 plus so on up to your Mn. That means this will be equal to summation of your M along y coordinate divided by summation of M along your F. The same way z-axis if I am talking about, z coordinate about your center of mass will be equal to your M1 Z1 plus of your M2 Z2
plus so on up to your mn zn divided by your m1 plus m2 plus so on up to your mn. That means that will be equal to summation of your m into z divided by summation of your n. Done, beta? Am I clear with this one? So if I need to calculate the position of mass of the center of mass for your particle, for a system of a particle along x-axis, y-axis and z-axis, I can use the formula of your xcom, ycom and as well as of your zcom. Clear? Sure. Next slide. Center of mass for two particle system. Like say for example, for 2-point masses. For 2-point masses. Very important formula. मान के चलो, we are having first particle somewhere here. This is your m1. And another particle is somewhere here. This is right now for me your m2. And this one is having a coordinate of your y-axis, and this is having the coordinate along your x-axis. So if I'm writing the coordinates for this one, so coordinates of this center of mass of this particle will be equal to m1 is at your 0, 0, and m2 is at your right now. So let's say for example, distance between both of this particle is right now for me equal to your r. Okay, distance between them is say for example of your r. That means m2 will be equal to how much for me, beta? Coordinates will be r comma of your 0. Center of mass will lie somewhere in between them, beta. Somewhere in between them, where will be a center of mass? मान के चलो somewhere यहाँ पर there will be your center of mass. And that center of mass will be at what position right now? For example, if I'm writing here, from here to here, if I'm taking the distance right now for this particle, so that is like say for example of your x1, x2. Okay. Let's say for example, from here to here, if I'm taking right now the position vector right now, let's say for example, center of mass from m1, if it is at a distance of r1, the second one will be at a distance of your r2, isn't it? Now, if I need to calculate the value of your r1 and as well as of your r2, we are having one direct shortcut formula and not deriving that one. You can directly remember, if I need to calculate the value of r1, r1 will be equal to second mass, that is m2 into total distance divided by your m1 plus of your m2. In the same way, r2. R2 will be equal to your, if I'm talking about the R2, opposite mass of your R2 will be equal to your how much for me? M1 into R divided by your M1 plus of your M2. So this will be the position of center of mass from M1 and as well as of your M2. Clear? M1 R1 is equals to your M2 into R, and R2 is equals to your M1 into total distance divided by M1 plus of your M2. Clear, beta? ऐसे I'll give you an example. Try to do the question for this one fastly. मेरे पास एक particle mass है यहाँ पर m, and there is another particle mass here, like say for example 2m, and the distance between them is say for example of your r, isn't it? So now the question is find r1 and r2, where the center of mass will be lying. Like say somewhere here is right now for me center of mass. This is your r1 from here to here, and this one is r2 from here to here. Now tell me what will be the R1 and R2, beta? Slow, jaldi बोल दीजिए. Tell me the value of your R1. R1 will be equal to. चलो जल्दी से बोलो. R1 will be equal to how much value? R1 is equal to M2. M2 मतलब 2M हो गया यहाँ पर. यहाँ पर M1 will be equal to M and M2 will be equal to 2M. ठीक है. So it is right now for me 2M into total distance is right now R divided by M1 plus M2. That is nothing but 2M plus of your M. So it will be equal to how much for me? 2M into R divided by 3M. So this one will get cancelled. So the answer will be equal to how much for me? 2 by 3 times of R is your R1. Similarly, if I am talking about your R2, R2 will be equal to, what is the formula? R2 M1. M1 is nothing but M into total distance between them R divided by total mass. So this value mm will get cancelled. So this value will be equal to your R by 3. Am I clear? Am I clear, beta?
Okay. Sure. Let me give you one more question. Find find position of find the position of center of mass. Find position of center of mass. ये diagram ऐसे दे रखा है basically. This is your x-axis and this is your y-axis. Okay. There is one mass here right now. This is your M. And there is one more mass here right now on this one. This is your M. And there is one more mass here right now. This is also your M. And there is one more mass on this one right now here. This is also your M. Okay. And distance of each of this one is right now, say for example, L. The distance of each of this one is right now for me equal to your 2L. All of them are having the masses of your M. So try to do it out. Can anyone give me what will be the answer for this? Center of mass of the system will be equal to your how much? Whether the particle will be having center of mass along x-axis or y-axis or something. Chalo. See here. If I'm talking about the first coordinate, for the first particle, x1 will be equal to how much for x1 is equals to your L, x2 will be equal to how much for me? 2L, x3 will be equal to your 3L, and x4 will be equal to your 4L. Center of mass, because each is having your L ना बेटा, इसका center of mass यहाँ पर होगा, इसका center of mass यहाँ पर, इसका center of mass यहाँ पर, इसका center of mass यहाँ पर, along x-axis. इसी तरह से y1 का देख लीजिए, y1 is equals to your L by 2 y axis में, because everything is right now from here to here it is L, इसका आधा मतलब L by 2. In the same way y2 will be equal to how much will be 3L by 2, because this one is your L ना, second one के लिए. So total is L plus L by 2, that is nothing but 3L by 2. Then y3 is equals to how much for me? 5L divided by 2, and y4 is equals to how much for me? 7L divided by 2. आया सभी को? Am I clear? Shall I write in detail for you again? देखो, यहां से यहां तक ये y1 होगा बेटा, यहां से यहां तक दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू y2, ठीक है ना, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू y3, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू y4, ठीक है ना. एक्स एक्सिस के बारे में अगर पूछोगे आप, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब यहां से यहां तक ये हो गया मेरे पास x1, यहां से यहां तक ये हो गया मेरे पास x2, यहां से यहां तक ये हो गया मेरे पास x3, ठीक है ना. एंड फॉर दिस वन दिस विल बी इक्वल टू योर x4, यहां से यहां तक दिस पार्टिकल विल बी इक्वल टू योर x4. So I got the value of x1, x2, x3, x4. Clear for everyone? आया समझ में? x एक्सिस कैसा है, y एक्सिस कैसा है, समझ में आया सभी को? सलिया, am I clear now? Shilpa, isn't it? So I got the value of your x1, y1, and as well as of your xm. Shilpa, Juveria Firdaus, S. Zamil, S. Okay, Shilpa is also S. तो अभी x एक्सिस का फॉर्मूला निकाल लीजिए. x एक्सिस का फॉर्मूला कितना है मेरे पास? xcm का फॉर्मूला 4 पार्टिकल्स है, तो x एक्सिस along your xcm value will be equal to how much for me बेटा? xcm will be equal to your, it is your m1 x1 plus of your m2 x2 plus of your m3 x3 plus of your m4 x4 divided by your m1 plus m2 plus m3 plus m4. ठीक है ना. So now write the values of that one, we'll get the answer. M1 is right now for me M, x1 is how much for me your L, plus M2 is your M, x2 value is right now 2L, plus next one is right now for me M, again right now the distance of this one is right now for me how much for? कितना आ रहा है बेटा? M into your 2L, उसके बाद कितना है? That will be equal to 3L, isn't it? So this will be equal to 3L, plus this one is your M into your 4L divided by M plus M plus M plus M. ठीक है ना. So this value will be equal to how much बेटा? This is 2, this is 3, and this is 4.
तो प्लीज कैन यू एक्सप्लेन वंस। कहां से एक्सप्लेन करो बेटा? देखो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट जो है ना ये वाला है बेटा, ये पूरा कितना है मेरे पास 12 है ना। इसका आधा मतलब कितना हो गया बेटा L/2, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस दे रखा है, प्रॉब्लम है ये वाला 12 दे रखा है और ये वाला L दे रखा है, ठीक है ना। तो इसके लिए L x1 इज नथिंग बट इक्वल टू हाउ मच, दैट वन रिलेशन है कि नहीं? हमें क्लियर? क्लियर है? चलिए चलिए, ऊपर का कितना आ रहा है बेटा पूरा? दिस इज 1 + 2 3, 3 + 3 6, कितना आ गया? 6 + 4 10, this is your 10 ml, this is your 10 ml, so कितना आ रहा है? This is your 10 into ml divided by एक का मास कितना है? m + m + m, 1 2 3 4, this is your 4 into your m and m will get cancelled, so this will be equal to how much better? 2 5s are 10, 2 2s are, it means 5/2, 5/2 times of your l, 5/2 मतलब कितना हो जाएगा बेटा? 2.5 times of your l। आई बात समझ में सभी को? वेरी गुड। नाउ आई होप यू कैन डू द वैल्यू ऑफ YCM। YCM कर लोगे ना? YCM का फॉर्मूला देखो कितना है? YCM is equals to, YCM is equals to same, that is your M1 Y1 plus of your M2 Y2 plus of your M3 Y3 plus of your M4 Y4 divided by total mass, that is nothing but M1 plus M2 plus M3 plus M4। क्लियर है? तो M1 की वैल्यू M है, Y1 की वैल्यू कितनी थी? L/2 प्लस M इंटू दिस वन इज 3L/2 प्लस ऑफ योर M इंटू दिस वन इज 5L/2 प्लस ऑफ योर M इंटू 7L/2 divided by total mass, that is nothing but M plus M plus M plus M, ठीक है ना? So this value will become how much for me right now? So this value will become for me how much? Can anyone tell me what will be the value of this one? कितना आ रहा? ml पूरा कॉमन ले लो बेटा। So this will be equal to 1/2 plus of your 3/2 plus of your 5/2 plus of your 7/2 divided by m. M and m also will get cancelled. Done? तो देख लो कितना आ रहा? 12 आ रहा। चलिए, so this total is coming out for me or 12। आई बात समझ में सभी को? आई होप यू गॉट एन आइडिया। क्लियर है? शिल्पा, ऐसे वाले प्रॉब्लम्स कर लोगे ना? ठीक है, चलो और एक एग्जांपल देख लीजिए बेटा, गुड क्वेश्चन है। मान के चलो एक्स कोऑर्डिनेट है, दिस वन इज राइट नाउ फॉर मी वाई कोऑर्डिनेट, और मेरे पास एक पार्टिकल है यहाँ पर, दिस इज राइट नाउ फॉर मी 2 kg which is making an angle of 37 degrees, and this one is right now for me 5 meters, and each particle is, यहाँ पर 2 kg है and यहाँ पर मेरे पास 4 kg है, ठीक है ना? So I need to calculate the center of mass of this one. Question is find center of mass, find center of mass of coordinates। जो सेंटर ऑफ मास होगा ना उसका कोऑर्डिनेट्स निकालना है मुझे। कैसे निकालेंगे बोलिए? देखो ये 4 kg और 2 kg बीच में सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं रह जाएगा, तो मान के चलो अगर ये R1 है, ये हो जाएगा मेरे पास R2, ठीक है ना? R1 की वैल्यू कितनी होगी बताइए? R1 की वैल्यू अगर मैं निकाल रहा हूं तो R1 इज इक्वल्स टू, यानी सेकेंड मास होगा राइट नाउ M2, M2 कितना है मेरे पास 2
इंटू इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ऑफ योर 4 टोटल मास, so it is your 10/6, 10/6 मतलब 5/3 meters, ठीक है ना। यानी R1 की वैल्यू कितनी हो गई 5/3, R1 इज इक्वल्स टू 5/3। नहीं 5/3 का एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास कहां से कहां तक है 4 kg से सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे 5/3, यानी ये कितना बन गया मेरे पास 5/3 इंटू cos 37 और वर्टिकल कोऑर्डिनेट ऑफ दिस सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू हाउ मच वर्मी 5/3 इंटू साइन ऑफ योर 30 सॉरी cos ऑफ योर 37, ये cos आ गया ना, ये साइन आएगा सॉरी बराबर है, so this will be sin of your 37 बराबर ही दिखा, ठीक है ना। so therefore I can write x coordinate will be equal to how much वर्मी, इसका x coordinate है 5/3 into cos 37 और इसका y coordinate है 5/3 into sin of your 37, ठीक है। cos 37 कितना होता है बेटा, so this is 5/3 into this will be equal to your how much वर्मी 4/5, 5 and 5 will get cancelled, so coordinate is your 4/3. Done. So this will be equal to 5/3 into this will be equal to 3/5. तो ये वाला कट गया, so that will be equal to 1. याद रख लेना बेटा sin 37 3/5, cos 37 4/5, ये बेसिक मैथमेटिक्स में करे होंगे ऑलरेडी, याद नहीं रहे तो दिन मुश्किल। cos 37 कितना होता है 4/5, sin 37 कितना होता है 3/5, क्लियर। चलो एक वाला मॉडल था, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिख लो center of mass of continuous mass distribution, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन यानी रेगुलर बॉडीज के लिए, जैसे रॉड है, सॉलिड स्फीयर है, हैलो स्फीयर है, वैसे वालों के लिए अपने को सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो मान के चलो कोई भी एक रिजिड बॉडी अगर दे दे तो उसके लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं, अगर पोजीशन वेक्टर में लिखो आरसी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ योर आर इनटू डीएम डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ योर डीएम, isn't it? That is equals to integral of dm कितना होता है बेटा m होता है, so it is 1/m integral of your r bar into your dm, clear। now write the first formula, अगर x axis में निकालना है मुझे तो xc will be equal to integral of your x into dm divided by total mass, that is nothing but equal to your capital M लिख लो या integral of dm लिख लो। उसी तरह से सेंटर ऑफ मास अलोंग YCM, so it will be YC will be equal to integral of y into your dm divided by integral of your dm। उसी तरह से z एक्सिस पे लिखना है मुझे, तो z एक्सिस के लिए ZC is equals to integral of y into your dm divided by your dm। अब यहाँ पर dm निकालने का तरीका क्या है बेटा, आप लोग को तो मालूम होगा, ये इंटीग्रल ऑफ योर dm निकालने का तरीका लिख रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पर जल्दी से लिख लीजिए, कटेड मास dm divided by original mass is equals to कटेड लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, वन डायमेंशन बॉडीज के लिए लाइक रॉड वगैरह जो है ना इसके लिए, ठीक है। उसी तरह से कटेड मास डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मास इज इक्वल्स टू कटेड एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया, टू डायमेंशन बॉडीज के लिए जैसे डिस्क वगैरह होते हैं ना उसके लिए, एंड थ्री डायमेंशन बॉडीज के लिए कटेड मास डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मास इज इक्वल्स टू कटेड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम फॉर थ्री डायमेंशन बॉडीज। हमें क्लियर बेटा, हमें क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग बेटा, सेंटर ऑफ मास ऑफ स्टैंडर्ड बॉडीज, ये आपको बाय हार्ट होना है बेटा, ये आपको बाय हार्ट है ना, नहीं तो यू कांट डू इट आउट एनीथिंग। फर्स्ट वाला देखो बेटा, फर्स्ट वाला इज सेमी सर्कुलर रिंग, इसका डेरिवेशन के बारे में मत कंसंट्रेशन करो, फर्स्ट ट्राई टू रिमेंबर द फॉर्मूला। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेमी सर्कुलर रिंग, एक सेमी सर्कुलर रिंग ऐसी है बेसिकली, ये इसका रेडियस हो गया r, इसका सेंटर ऑफ मास जो है ना यहाँ पर होगा समवेयर यहाँ पर, so ये हो गया इसका सेंटर ऑफ मास, y एक्सिस पे होगा, तो y इज इक्वल्स टू व्हाट इज एन आंसर फॉर दिस वन 2r डिवाइडेड बाय पाई, याद रखो बेटा 2r योर सेमी सर्कुलर, ठीक है। सेकंड वन
सेमी circular disk. If I'm talking about your semicircular disk, यानी एक ऐसा सेमी सर्कुलर डिस्क है, ये हो गया इसका रेडियस ऑफ कैपिटल आर। डिस्क मतलब जहां पर टोटल मास है इसके अंदर, यहां से यहां तक ऐसा कुछ, ठीक है ना, रफली याद रख लीजिए। तो ऐसे वाले केस में सेंटर ऑफ मास इज समवेयर यहाँ पर, दिस विल बी इक्वल टू योर सी। तो यहाँ से यहाँ तक ये सेंटर ऑफ मास फिर वाई एक्सिस में होगा, तो वाई इज इक्वल्स टू 4r डिवाइडेड बाई 3 पाई। इसके अच्छे खासे डेरिवेशन है बेटा, लेकिन अभी जरूरत नहीं है डेरिवेशन के बारे में, सो डोंट बॉदर अबाउट द डेरिवेशंस राइट नाउ फॉर दैट, ठीक है ना। चलो थर्ड वन इज हैलो हेमिस्फीयर। हैलो हेमिस्फीयर, हैलो हेमिस्फीयर, ये बाय हार्ट होना बेटा, कंपलसरी बाय हार्ट होना, मैं तो करना मुश्किल हो जाएगा। ये हेलोस्फीयर है ऐसा कुछ, ठीक है ना। ये इसका हो गया रेडियस आर, ये इसका ओरिजिन। इसका सेंटर ऑफ मास विल बी अगेन अलोंग वाई एक्सिस, यहाँ पर कहीं पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस हो गई, तो वाई इज इक्वल टू योर आर बाई टू। वाई इज इक्वल टू कितना, आर बाई टू। फोर्थ वन, नेक्स्ट वन इज सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड हेमिस्फीयर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट योर सॉलिड हेमिस्फीयर, सेम इसी तरह से रहेगा, बट दोनों का डिफरेंस क्या था, पहले वाला तो हैलो था, अब ये सॉलिड होगा बेसिकली। यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस हो गया कैपिटल आर, तो ये हो गया इसका सॉलिड नेचर पूरा, ठीक है। इसके लिए कितना हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला याद है किसी को? इसके लिए भी सेंटर ऑफ मास विल बी लाइंग अलोंग योर वाई एक्सिस, दैट इज यहाँ पर कहीं पर इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा अलोंग वाई एक्सिस, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी विल बी इक्वल टू वाई इज इक्वल्स टू 3r डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। फिफ्थ, आर्क ऑफ योर रिंग अगर ले रहा हूं मैं बेसिकली, आर्क ऑफ रिंग एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, ट्राई टू रिमेंबर दिस वन। पर आर्क ऑफ योर रिंग, रिंग मतलब हाइलो स्फेरिकल बॉडी जैसा होता है ना, ऐसा एक आर्क ले रखा मैंने, ये इसका सेंटर ऑफ मास अलोंग वाई एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस, यहाँ से यहाँ तक इसका ये रेडियस हो गया बेसिकली, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक इसके एंगल मान के चलो थीटा नॉट है, इसके भी एंगल मेरे पास थीटा नॉट है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है ना यहाँ पर होगा समवेयर, यहाँ से यहाँ तक दिस विल बी सेंटर ऑफ मास, वो टू सी। तो वो टू सी निकालने का तरीका देखो डायरेक्टली, वो टू सी विल बी इक्वल टू आर इंटू साइन थीटा नॉट डिवाइडेड बाई थीटा नॉट, ठीक है ना। ओ टू सी विल बी इक्वल टू आर इंटू थीटा नॉट डिवाइडेड बाई यूर थीटा, this will be the center of mass for any arc of your circle अगर आप ले रहे हो, तो center of mass will be equal to your r into sin theta divided by theta, theta should be taken in terms of your radius, ठीक है। चलो सिक्स्थ वन और एक फॉर्मूला लिख लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट, हेलो कोन, हेलो कोन, हेलो कोन, मान के चलो हेलो कोन ऐसा कुछ है बेसिकली, दिस विल बी योर हेलो कोन, तो सेंटर ऑफ मास फॉर दिस वन विल बी समवेयर यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस हो गई, और ये हो गया इसका रेडियस, और ये हो गया इसका हाइट, और इसका सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू h बाई, ठीक है ना। उसी तरह से सॉलिड कोन भी होता है, फॉर योर सॉलिड कोन, सॉलिड कोन जैसा आइसक्रीम होता है ना, आइसक्रीम का कोन, उसी तरह से ऐसा कुछ, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, और ये हो गया इसका वाई एक्सिस, और ये हो गया इसका एक्स एक्सिस, और ये सॉलिड है बेटा, तो इसको मैं थोड़ा डार्क कर ले रहा हूँ, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये हो गया सेंटर वो, और समवेयर सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा सी, isn't it? So for this one, the center of mass will be equal to h by 4, h by 3 for hollow, and for solid it is your h by 3, हमें क्लियर। चलो उसी तरह से एक छोटा सा शॉर्टकट फॉर्मूला बनता है, यहाँ पर लिख रहा हूँ देखो, सेक्टर ऑफ योर डिस्क, कोई भी एक सेक्टर है,
सेक्टर ऑफ डिस्क। डिस्क मतलब सॉलिड मटेरियल के लिए आर्क नहीं होता ना, उसी तरह से एक डिस्क है मेरे पास, ऐसा यहाँ से यहाँ तक डिस्क है, ये इसका वाई एक्सिस हो गया और ये इसका रेडियस हो गया आर, और ये भी हो गया इसका रेडियस आर, ठीक है ना। ये हो गया इसका ओरिजिन, दैट इज नथिंग बट वो, तो ये हो गया थीटा नॉट और इसकी भी एंगल हो गई थीटा नॉट। सेंटर ऑफ मास इज समवेयर यहाँ पर, so that will be equal to c and this is totally a solid sector of solid disk बोल रहा है ना, सेक्टर ऑफ ए डिस्क। डिस्क मतलब ये पूरा सॉलिड रहता है, जैसा प्लेट, प्लेट को हम लोग एक पिज्जा के शेप में कट कर रहे हैं, चार कोनी सर तीन कोनी, तो ऐसे वाले पे सेंटर ऑफ मास जो होगा ना, दैट विल ऑलवेज लाई OC के लॉन्ग, OC विल बी इक्वल टू, सॉरी O to C will be equal to center of mass जो होगा बेसिकली, that will be along your, इसको निकाल देता हूँ, 2r divided by 3 into, इसको निकाल दो, साइन ऑफ योर थीटा नॉट डिवाइडेड बाई थीटा, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका सेंटर ऑफ मास। फर्स्ट सॉलिड के लिए सेंटर ऑफ मास अलोंग वाई एक्सिस निकालना है, यू कैन यूज द फॉर्मूला 2r/3 into your sin थीटा नॉट divided by theta naught, very important formula. Then am I clear? क्लियर है यहाँ तक सभी को? इंटीग्रेशन पे थोड़े प्रॉब्लम्स करते हैं बेटा, बेसिक फॉर्मूले से आते हैं बेसिकली, तो फॉर्मूला फिर से एक बार याद रख लीजिए। सेंटर ऑफ मास फॉर योर एक्सीएम विल बी इक्वल टू योर x into dm डिवाइडेड बाय df, ycm के लिए y into dm और zcm के लिए दिस वन, एंड दिस वन इज फॉर द पोजीशन वेक्टर फॉर योर r वेक्टर में अगर लिख रहे हैं तो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर दैट, ठीक है ना। तो अगर वन डायमेंशन के लिए कटेड मास निकालना है, कटेड मास बाय ओरिजिनल मास इज इक्वल्स टू योर dx by dl, दैट इज कटेड लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। यहाँ पर कटेड मास बाय ओरिजिनल मास इज इक्वल्स टू कटेड एरिया बाय ओरिजिनल एरिया, कटेड एरिया इज dA, ओरिजिनल एरिया इज ये बेटा। तो थ्री डायमेंशन बॉडीज के लिए कटेड मास बाय ओरिजिनल मास, ओरिजिनल कैपिटल M इज ओरिजिनल मास, dm इज योर कटेड मास, dv इज कटेड वॉल्यूम एंड कैपिटल V विल बी द ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है ना। ये वाले तो अपने हार्ड करना है बेसिकली। आप एक क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से, a rod of length L having linear mass density, मतलब लेंथ के लिए लीनियर मास डेंसिटी, टू डायमेंशन के लिए एरिया सरफेस डेंसिटी, थ्री डायमेंशन के लिए वॉल्यूम डेंसिटी, ठीक है ना। लीनियर मास डेंसिटी लैम्बडा इज इक्वल्स टू लैम्बडा नॉट इनटू x डिवाइडेड बाय l, इसका सेंटर ऑफ मास आना है बेटा। फाइंड सेंटर ऑफ मास फॉर दिस रॉड, चलो ट्राई करो सभी लोग। रॉड ऑफ लेंथ L है मेरे पास, दिस इज योर रॉड, ये इसका y एक्सिस है और ये इसका x एक्सिस होगा, तो अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं, इसके अंदर रेगुलर बॉडी है बेटा, दिस इज योर dx, x एक्सिस से कितनी दूरी पे, x की दूरी पे, दिस इज योर ओरिजिन। तो x एक्सिस का फॉर्मूला लीजिए, xcom is equals to integral of your x into dm divided by integral of dm, ठीक है ना। लीनियर मास डेंसिटी मतलब लैम्बडा, लैम्बडा इज इक्वल्स टू कटेड मास डिवाइडेड बाय योर ओरिजिनल लेंथ, दैट इज नथिंग बट कटेड लेंथ, सॉरी। So dm will be equal to how much value, lambda into dx, lambda दे रखा है प्रॉब्लम में, lambda नॉट into x divided by l into your dx, आया सभी को, हमें क्लियर, ठीक है ना। तो अभी लेके जाके यहाँ पर डाल दो, so this is your integral of your x into dm is equals to lambda नॉट into x divided by l into your dx divided by integral of your dm, integral of dm will be equal to how much? Directly I can write the values of your integral of dm will be equal to your कटेड मास by your original mass into your dx,
isn't it? That is nothing but lambda into dx, isn't it? तो ये भी कितना बन जाएगा, x into dx ही बनेगा ना. So it is your integral of lambda into your x into your dx divided by your l. Limit will be from 0 to l, limit will be from 0 to l. कुछ कांस्टेंट है क्या, देखो इसमें से लैम्बडा नॉट बाई एल कांस्टेंट है, ऊपर किसमें बाहर निकाल लीजिए, लैम्बडा नॉट डिवाइडेड बाई एल इंटू इंटीग्रल एक्स इंटू एक्स, ये बन गया एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स. लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू एल डिवाइडेड बाई, इसमें भी लैम्बडा नॉट डिवाइडेड बाई एल बाहर आएगा, इंटीग्रल ऑफ योर एक्स इंटू डीएक्स आ जाएगा. ये वाला कट गया. अब तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए, इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर ऑफ योर एन इंटू डीएक्स will be equal to your x n plus 1 divided by n plus 1. ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं. सो इंटीग्रल एक्स के स्क्वायर की जगह, एक्स की जगह एन की जगह क्या है बेटा, स्क्वायर है. तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, वो इंटीग्रल ऑफ योर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू योर एक्स 2+1 डिवाइडेड बाई योर 2+1, यानी हो गया एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2. उसी तरह से इंटीग्रल ऑफ योर एक्स पावर 1 इंटू डी एक्स, यहाँ पर कितना है, पावर 1 है, कुछ भी नहीं दिया तो. So that will be your x 1+1 divided by 1+1, that will be equal to x square divided by 2. तो इसके वैल्यूज अगर मैं लिख दूं तो that will be equal to integral of x square into dx will be equal to how much फॉर्मूला बेटा, x cube divided by 2 and length limits will be from 0 to your l divided by, this will be x square divided by 2, limits will be from 0 to your l. इसमें से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालो, x cube divided by 2 divided by l square divided by 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2+1, दिस विल बी इक्वल टू 3 ना, यहाँ पर सॉरी, ये हो गया यहाँ पर 3 और यहाँ पर हो गया 2. दैट मींस दिस वैल्यू विल बी हियर बी इक्वल टू योर 3, हियर विल बी इक्वल टू 2. तो ये वाला कितना बन गया मेरे पास, l क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इनटू दिस वन इज 2 डिवाइडेड बाय l स्क्वायर. l स्क्वायर इसमें से l चले जाएगा, सो द आंसर विल बी इक्वल टू 2l डिवाइडेड बाय 3.
सॉरी बेटा, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है ना, चलो। तो ये वाला इंटीग्रेशन प्रॉब्लम कर सकते हैं ना अभी आप लोग, रॉड वगैरह का कंडीशन पे। मैं और प्रॉब्लम्स कराऊंगा, तो आज जरा फास्ट फास्ट की रिवीजन करा रहा हूँ, सो दैट हम बेसिक वाला प्रॉब्लम्स कर दे। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पे चलते हैं, कैविटी वाली प्रॉब्लम्स करना। ठीक है, कैविटी वाली प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट हेडिंग, कैविटी। ठीक है, कोई भी एक रिजिड बॉडी में से बेटा, ऐसा कुछ रिजिड बॉडी है मान के चलो, इसका सेंटर ऑफ मास अगर यहीं पर कहीं पर है, दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी, उसमें से मैंने एक छोटा सा पार्ट निकाला हुआ है, कुछ छोटा सा पार्ट ऐसे निकाल दिया। दिस इज द मास विच इज बीन कट आउट, दिस इज द मास विच इज बीन कट। तो जब सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, इट विल ट्राई टू शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पर कहीं पर इसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा। ठीक है ना, सो दिस विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग बॉडी, दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग बॉडी राइट। So this is the center of mass of original body beta. This is the center of mass of the remaining. That means this is the r remaining, the distance of the center of mass, isn't it? So यहाँ से यहाँ तक इसका center of mass होगा, तब इन दोनों की यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, that is called as of your r cutted का distance. और यहाँ से यहाँ तक जो होगा, that will be your r of your remaining, r of your remaining. ठीक है ना, हमें क्लियर? अब इसमें देखो, ये जो वाला बॉडी है ना, ये वाला बॉडी बेसिकली, ये जो ग्रीन से मैंने किया हुआ, दिस इज द रिमेनिंग मास ऑफ योर रिमेनिंग बॉडी, मास ऑफ योर रिमेनिंग बॉडी। इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, अगर याद रखना है तो रख लीजिए। जो शिफ्ट होगा सेंटर ऑफ मास राइट नाउ फॉर मी, द शिफ्ट इन द सेंटर ऑफ मास इज बीन कैलकुलेटेड बाय, यहाँ से तक जो शिफ्ट हुआ ना, सो दैट इज एक शिफ्ट जो सेंटर ऑफ मास एक्चुअली कहां पर था, सेंटर ऑफ मास पे था, दैट विल बी इक्वल टू योर मास विच इज बीन कटेड इनटू x which is being cut divided by your mass of your remaining, mass of your remaining. Am I clear with this one? Clear है? Not able to, unable to see your screen. Screen share नहीं हो रहा बेटा। अभी हो रहा है ना? ये देखो बेटा, जो रेड वाले से ड्रॉ किया ना, वो एक्चुअल ओरिजिनल बॉडी है, उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे है। मैंने छोटा सा पार्ट कट किया हुआ है, ये ब्लू वाला जो पार्ट है ना, दैट इज योर कटेड, तो मास कटेड यहाँ पर है। दिस इज द रिमेनिंग, जो येलो तो ग्रीन से लिखा है ना, दैट इज योर रिमेनिंग मास। तो शिफ्ट का फॉर्मूला हम कभी भी लिखते हैं यहाँ पर, हाउ डू यू राइट द शिफ्ट फॉर्मूला, एक शिफ्ट इज इक्वल्स टू मास कट इनटू योर एक्स कट डिवाइडेड बाय योर मास रिमेनिंग। ठीक है, दिस इज डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला बेटा। अब डिराइव करते बैठे को तो दुनिया का टाइम लग जाएगा बेसिकली।
जैसे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं बेसिकली आपने किया ही होगा, फिर भी मैं एक बार आपको करवा देता हूँ इस फॉर्मूले से। मान के चलो मेरे पास एक डिस्क है ऑफ रेडियस r divided by 2, is being removed. The disk of radius how much? R by 2 is removed. From where? From disk of radius capital R. My question is find center of mass of remaining object. Center of mass of your remaining object. तो करने का तरीका देखो बेटा, मेरे पास एक्चुअली ओरिजिनल बॉडी है, ये ओरिजिनल बॉडी है, इसमें से एक छोटा सा पार्ट कट किया मैंने, ठीक है ना, ऐसा। इसका रेडियस कितना है बेटा, यहां से यहां तक इसका जो रेडियस था कैपिटल आर था, ओरिजिनल बॉडी का जो रेडियस था दैट विल बी इक्वल टू योर कैपिटल आर। ओके, ये पार्ट अपन ने कट किया हुआ है, ठीक है। ओरिजिनल बॉडी का रेडियस जो है दिस इज योर कैपिटल आर, जो हमने कट किया था बेसिकली दैट इज ऑफ योर रेडियस कितना, आर बाई टू, जिसका रेडियस कितना है, आर बाई टू है। रेडियस आर बाई टू मतलब यहां से यहां तक इसका रेडियस होना चाहिए। तो ये जो सर्किल बनेगा मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, ये हो गया मेरे पास सर्किल ऐसा कुछ। एक मिनट बेटा, यहाँ से इसका रेडियस भी आर है, लेकिन इसका रेडियस जो है ना आर बाई टू है, इस तरह से ये वाला पार्ट जो है ना कट किया इस वाला, ठीक है ना। क्लियर है क्वेश्चन? अब क्वेश्चन पढ़ लो, आराम से निकल जाता। एक्स कट कितना है बेटा, जल्दी से बताओ। एक्स कट इज इक्वल, जो कट किया हम लोग ने आर बाई टू है, इसने मास ऑफ योर कट बॉडी, जो मास हम लोग ने कट किया हुआ है ना दैट विल बी इक्वल टू, ये टू डायमेंशन बॉडी है तो इसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, सरफेस मास डेंसिटी दैट इज सिग्मा इनटू इसका एरिया कितना हो जाएगा, आर बाई टू होल स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर, isn't it? And mass of remaining का कितना हो जाएगा, राइट नाउ फॉर मी सिग्मा इंटू पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, ओरिजिनल मास से मास कट को निकालेंगे दैट इज सिग्मा इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर, यानी दिस विल बी सिग्मा विल बी इक्वल टू दिस वन, और ये पाई भी बाहर आ जाएगा इंटू योर दिस वन इज योर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर, यानी वन माइनस वन बाई फोर समझो, यानी थ्री बाई फोर, आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, सो दिस इज थ्री पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर, ठीक है ना। तो अब सब कुछ आ चुका है मुझे, सो एक्स शिफ्ट विल बी इक्वल टू
व्हाट इज द फॉर्मूला राइट नाउ फॉर मी? क्या फॉर्मूला लिखे थे देखो, मास कट का फॉर्मूला लिख दो मैं यहाँ पर, सिग्मा इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू यूर। व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ रिलेशन राइट नाउ? एक्स कट कितना है? r/2 जो पार्ट अपना ने कट किया हुआ, डिवाइडेड बाय मास रिमेनिंग दैट इज सिग्मा इंटू 3 पाई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ए पाई आर स्क्वायर चले गया, ये सिग्मा भी चले गया, isn't it? So the answer value for this one will be equal to how much, beta? So this will be equal to your r by your 8 divided by, this one is 3 divided by 4, ठीक है ना? So this is equals to r by 8 into 4 by 3, ठीक है? So this is 4 ones are 4 twos are, so this will be equal to r by 3 twos are 6. So this will be equal to your r by 6. आया सभी को? Am I clear? X shift is equals to how much for me? R by 6. आ गया? Next heading, displacement of center of mass। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आप लोग को बोलना भूल गया है, तो अगर आप लोग को आइडिया है तो ठीक है, नहीं तो फिर भी एक बार मैं लिख देता हूँ। वन डायमेंशन बॉडी के लिए वी रिप्रेजेंटेड बाय लेटर लैम्बडा बेटा। लैम्बडा इज नोन एज लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है ना? टू डायमेंशन बॉडी को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू योर सरफेस मास डेंसिटी बोलते हैं उसको हम लोग। और थ्री डायमेंशन बॉडी को रो से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज नथिंग बट योर वॉल्यूम मास डेंसिटी, ठीक है ना? ये वाले टर्म्स आ गए तो ऐसा याद रख लीजिए। लैम्बडा मतलब लीनियर मास डेंसिटी, सिग्मा मतलब सरफेस मास डेंसिटी, एंड रो मतलब राइट नाउ फॉर मी वॉल्यूम मास डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय योर रो, ठीक है? Am I clear? नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ योर सेंटर ऑफ मास। We know already the formula of center of position of center of mass beta, RC will be equal to your M1 R1 plus of your M2 R2 plus so on divided by your M1 plus M2 plus so on up to your MN। तो उसी तरह से अगर मैं पोजीशन वेक्टर चेंज के लिए लिख रहा हूँ राइट नाउ, दैट इज डेल्टा RC will be equal to your M1 into delta R1 plus of your M2 into delta R2 plus so on divided by your M1 plus M2 plus so on, ठीक है ना? So this is the position vector right now, clear? अब मान के चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं आपको जरा सोच समझ के बताइए। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऐसा कोई सिस्टम है मेरे पास, यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसका मास है मेरे पास 2 kg और यहाँ पर है मास ऑफ योर 5 kg। जहां पर ज्यादा मास होगा वहां पर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा, दैट विल बी इक्वल टू योर एक्सीएल। यानी अगर ये मूव कर रहा है बाय 2 मीटर, अगर ये मूव कर रहा है बाय योर 3 मीटर, तो सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा? सो व्हाट इज द शिफ्ट इन द सेंटर ऑफ मास? आई एम क्लियर विद दिस वन, ठीक है ना? तो इट इज डेल्टा ऑफ योर एक्सीएम विल बी इक्वल टू m1 into delta x1 प्लस ऑफ योर m2 into delta x2 डिवाइडेड बाय, दो ही पार्टिकल है तो यहाँ पर m1 प्लस ऑफ योर m2 लिख दो बेसिकली, ठीक है ना? तो m1 की वैल्यू राइट नाउ 2, डे कितना डिस्प्लेस किया मेरे पास 2, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5, ए कितना डिस्प्लेस किया मेरे पास 3, ठीक है ना? सो इन विच डायरेक्शन? ऑपोजिट डायरेक्शन है तो -3 लेना, यहाँ पर वो बात इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में रहे तो प्लस लेना है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में रहे तो माइनस लेना है। इट इज 2 + 5,
This value will be 2 2s are 4 minus 5 3s are 15 minus 15 divided by this value will be equal to 7. So 4 minus 15 that means minus 11 divided by 7 meters. यानी center of mass जो है ना negative x axis में shift हुआ by your 11 by 7 centimeter. ये हो गया center of mass का shift. Am I clear with this one? Am I clear? चलिए उसी की तरह नेक्स्ट वन लिख लेते हैं. नेक्स्ट साइड हेडिंग velocity and acceleration. Velocity and acceleration of center of mass. Velocity and acceleration of your center of mass. Position vector को differentiate करिए. That is nothing but drc divided by dt. So that will give me the velocity of center of mass VCM. That is equals to your m1 v1 plus of your m2 v2 divided by m1 plus of your m2. उसी तरह से velocity को differentiate करिए. That is dvcm divided by dt. That will give me the acceleration of center of mass. So that value will be equal to your m1 a1 plus of your m2 a2 divided by your m1 plus of your m2. यहाँ से मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा इसको m into your m1 plus m2 कैपिटल M लिख लिया मैंने. That is VCM will be equal to your P net. ठीक है. उसी तरह से टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ योर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू F net. m1 plus m2 into a will be equal to yours. यानी इस टोटल को मैं कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा. इसको भी मैं कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ठीक है ना. एक छोटा सा नोट लिख लीजिए बेटा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन. First one, F net is equals to dp net divided by dt. ठीक है ना. और सेकेंड वाला फॉर्मूला इसके अंदर F net is equals to 0. तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल आल्सो बी 0. अगर नेट फोर्स 0 हो गया, मोमेंटम नेट मोमेंटम विल ऑलवेज रिमेन फॉर मी कांस्टेंट. यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल रिमेन फॉर मी कांस्टेंट. ठीक है. See this question, madam. A right circular cone
of radius capital R, radius capital R, and height 2R, and height 2R is placed on a hemisphere, is placed on a hemisphere of radius capital R. Okay? My question is, locate the center of mass of combined mass from O. ठीक है, we got a right circular cone. कुछ भी नहीं बोला मतलब कभी भी सॉलिड लेना है बेटा, याद रखो. तो ये हो गया मेरे पास एक सर्कुलर कोन, और उसके नीचे क्या है मेरे पास, हेमिस्फीयर है. ठीक है, ये हो गया इसका एक्स कोऑर्डिनेट, ये हो गया इसका वाई कोऑर्डिनेट. ठीक है, देख लीजिए एक बार जल्दी से. ये हो गया मेरे पास एक हेमिस्फीयर, ये वाला नीचे का पूरा. अगर कोन के बारे में कुछ भी नहीं बोला तो ऑलवेज टेक इट एज ऑफ योर सॉलिड बेटा फॉर डूइंग कैलकुलेशंस. डन. ये वाला अनदर पार्ट, ऐसा कुछ. ठीक है, यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस है मेरे पास 2r, और यहां से यहां तक का दिस वन इज गिवन एज r. सी दिस वन, राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस कैपिटल r, यानी इसका रेडियस हो गया मेरे पास कैपिटल r, एंड हाइट 2r इज बीइंग प्लेस्ड ऑन हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r, यानी इसका भी रेडियस कितना है r. Locate the center of mass of the combined system. Now, can anyone tell me where will be the combined center of mass, बेटा? पहले कोन के बारे में बात करते हैं. अलॉन्ग वाई एक्सिस ही होगा. अगर मैं कोन के बारे में बात कर रहा हूँ, मास विल बी प्रोपोर्शनल टू, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. वैसे भी एक ही मेटल से बना हुआ, तो डेंसिटी को मैं निकाल रहा हूँ, तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 1/3 पाई इनटू r स्क्वायर इनटू हाइट. हाइट इज राइट नाउ फॉर मी 2r, isn't it? इसको मैं मान के चल रहा हूँ, m is equals to your, I'm taking this one is of your m1, that is mass of the core. So m1 is equals to, मैंने m लेके चल रहा हूँ इस पूरे टर्म को, और इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बेटा, y1 is equals to 2r divided by 4. फॉर्मूला याद है, h by 4, h की वैल्यू 2r divided by 4, so that will be equal to r by 2. इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कहीं पर होगा, so this value is your h by 4. h की वैल्यू दे रखा है प्रॉब्लम में, this is your h, that is nothing but 2r, 2r divided by 4, that is nothing but r by 2. If I'm talking about for hemisphere, m2 will be directly proportional to again volume of this one, that is half of the solid sphere, 2/3 pi into your r cube. यानी m2 will be directly proportional to, yeah, that is m2 will be equal to your, this value is equal to how much for me, ये कितना हो गया, ये भी 2/3 pi r cube है ना बेटा, ये देख लो कितना हो रहा. This value is proportional to pi into r cube, pi into r cube, और यहाँ पर है 2 divided by 3, तो ये भी 3 है, तो ये m1 and m2 के m के बराबर है, isn't it? और y2 कहाँ पर होगा बेटा, y2 इज इसके एक्सिस से नीचे है, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, तो दिस इज बिलो द नेगेटिव एक्स एक्सिस, सो इट विल बी माइनस ऑफ 3r डिवाइडेड बाई 8, यानी y2 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 3r डिवाइडेड बाई 8 सॉलिड स्फीयर के लिए, सॉरी हेमिस्फीयर के लिए. So if I'm using the formula of YCM will be equal to, y-axis पे ही रहेगा ना, so it is your two bodies m1 y1 plus of your m2 y2 divided by m1 plus m2. m1 की वैल्यू m है, y1 की वैल्यू कितनी आई थी r by 2, प्लस m2 की भी वैल्यू m है, y2 की वैल्यू माइनस ऑफ 3r डिवाइडेड by 8 डिवाइडेड by m1 plus m2, that is equals to m plus of your m. ठीक है ना, तो ये वैल्यू कितना बन रहा है देखिए, this is your mr divided by 2 plus minus minus, this is 3m into r divided by 8 divided by m plus m, this will be equal to 2m. Everywhere m gets cancelled, so this will be equal to your r common 1/2 minus of 3/8 divided by 2. ठीक है ना, so इसका LCM कर लो, will get the value of your YCM. So YCM value will be approximately equal to r by 16.
I hope you got an idea how to do such type of your problems. Am I clear, beta? Am I clear? Bilba, am I clear with this one model, beta? These are the basic things which you should always remember for doing the numericals. Cutting का question कैसा करना है basically. When you remove certain amount of mass, how do you try to remove it out? So ये वाले पूरे questions आपको एक बार याद रख के करना है बेटा. ठीक है? Now something what we are going to do is really very important. It's really very important. The next standard explain. Understanding of momentum conservation in center of mass. Momentum conservation. We get regularly some good questions while practicing any test paper or something. Very important. See how to do such type of questions. First one, beta. You know from Newton's second law, F net is equals to mass of the body in terms of acceleration mOcm. Isn't it? And momentum will be equal to P net will be equal to mass into velocity of your center of mass. Isn't it? So I can even write F net is equals to rate of change of momentum P net divided by your dt. Isn't it? Here capital is nothing but mass of the system. Done? Now see here. If net force acting on system is 0, अगर नेट फोर्स कोई भी सिस्टम पे अपने पास 0 आ रहा है बेसिकली, अगर नेट फोर्स 0 हो गया तो मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा? कंजर्व होगा. सो जो भी नेट मोमेंटम होगा दैट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट. कांस्टेंट मतलब क्या? कंजर्व्ड. कंजर्व्ड मतलब क्या बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्व्ड? इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. अगर मोमेंटम कंजर्व्ड हुआ तो velocity of center of mass will also be conserved or it will remain for me constant. That is also remaining for me constant. अब इसमें दो केसेस बन सकते हैं बेटा. Now if I'm writing in this one, case number 1, number A. I'm writing the case number A for this one. देखो जरा. If velocity of center of mass is 0, remember बेटा, velocity of center of mass 0, it remains 0. It remains 0. That means what? Center of mass at rest, although the particles in the system may be moving. Okay, center of mass is at rest, although particles in system may move. Internally the particles might be moving, but center of mass of that system will always remain for me the same. Done? In this one, point number B. This is something very important. If velocity of center of mass is not equal to 0, मान के चलिए, वैसे वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा? जो सेंटर ऑफ मास रहेगा, सेंटर ऑफ मास continues to move with constant velocity. Move with your constant velocity. ये दो पॉइंट याद रखना है अपने. अगर velocity of center of mass 0 है, then it remains 0. And center of mass will always remains to be 0 at rest, although the particle might be moving. Very important beta.
center of mass it is at rest, particle in the system may move. अगर center of mass is not zero, then center of mass continues to move with your constant velocity. Clear? देखो मैं इसको मैथमेटिकली समझाने की कोशिश करता हूँ. Position vector of center of mass क्या है बेटा? RCM will be equal to your M1 R1 plus of your M2 R2 plus so on divided by total mass है ना M1 plus M2 plus so on. अगर RCM 0 है, that is nothing but M into your R will be equal to how much? Position vector of center of mass is not moving. That means this value will be equal to M1 into delta R1 plus of your M2 into your delta R2. Plus so on like that. Because delta RCM मैंने क्या किया हुआ है? 0 ले रखा है. That is delta RCM is equals to 0. Isn't it? Now see, here delta R1 and delta R2 so on are with respect to ground. They should be taken with respect to the ground. चलो थोड़ा सा मैं एग्जांपल करवा देता हूँ. Very famously आप लोगों को पूछा जाता है. Please see this one. If boy walks to other end of your plank, find distance moved by plank. Find the distance moved by plank. So this is a plank given for me. This is your plank. Okay. And here there is a man standing on this one. Okay. And it is kept on an horizontal surface which is smooth. Mass of this one is right now for me capital M. Okay. And length of this one is capital L. There is no friction on this one. Isn't it? We need to calculate the displacement of your center of mass. If the boy walks to the other end, that means in the second case, if I'm drawing the diagram for this one, same condition. Now the boy has reached to somewhere this position. From one end to another end. During that case, what is happening is, this body might have been displaced in the front direction. Isn't it? This body might have been moved here right now like this. तो ये बॉडी यहाँ पर कहीं पर होगा, यानी ये पर्सन अभी यहाँ पर कहीं पर आ गया. बात समझ में आ रही? That means this is your L. This has been moved from the original, like say for example, distance of your x. The remaining will be equal to how much for me? L minus of your x. Isn't it? As there are no external forces acting on that one, so it is M1 into delta x1 or delta R1 plus M2 into delta R2 is equals to 0. So it is your M1 into delta x1 लिख सकता हूँ मैं plus M2 into this one is your delta x2 will be equal to 0. X axis पे जा रहे हैं ना. So it is your M1 into this person has moved how much distance? L minus x plus of your M2. M2 is right now for me equal to capital M mass of the plank into mass कितना हुआ displacement हुआ minus of your x. That must be equal to 0. So x value will be equal to how much for me beta? M into L divided by your M plus of your capital M. So this is the displacement of the plank. बात समझ में आ रही है? See, ये smooth surface है, जैसा आइस वगैरह शेप पे है. अगर ये बॉडी सामने जा रही है तो दिस बॉडी विल बी डिस्प्लेस्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. सो हाउ मच डिस्प्लेस हुआ राइट नाउ फॉर दिस वन? देखो मैं इसको रफली यहाँ पर आपको लिखवा देता हूँ बेसिकली. तो ये यहाँ से ऐसा कुछ ये इतना डिस्प्लेस हुआ हो, ठीक है. तो ये यहाँ से एक्चुअली यहाँ पर था, ये जैसे पर्सन मूव करना शुरू किया हाँ यहाँ था. तो ये जो प्लैंक है ना, इट हैज बीन मूव्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. ये जो पर्सन था यहाँ पर, ये पर्सन को यहाँ पर अगर मैं निकाल दूं और इसको भी हटा दूं, सो इट हैज बीन मूव्ड लाइक दिस. आई बात समझ में? और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है. सो प्लैंक कितना डिस्टेंस मूव किया? -x. और पर्सन कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? L minus x. उसको ये फॉर्मूला में डाल दो, ये जो अपन अभी फॉर्मूला लिखे थे ना, ये वाले फॉर्मूले में डाल दो.
that will give me the answer. क्लियर है? अब इसका एप्लीकेशन बहुत सारे है बेटा, फिर राइट नाउ तो टाइम नहीं है इतने सारे एप्लीकेशंस करवाने के लिए, बट दिस इज वन ऑफ द मॉडल यू नीड टू रिमेंबर द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दैट. ठीक है, ठीक. कल और थोड़े इस पे प्रॉब्लम्स कर लेंगे बेटा, सेंटर ऑफ मास पे, और थोड़े अच्छे बहुत प्रॉब्लम्स, एक 10-20 प्रॉब्लम्स और मॉडल्स कर लेंगे. इतना ही कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको बेसिकली याद रखना है, तो जरा अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिए. We'll try to do some more good problems based on the center of mass in the tomorrow session of your class. ठीक है, take care बेटा, good night.